Hi everybody, welcome to our channel. I'm Simran and me and my best friend Navya have started this YouTube channel out of our love for psychology. So let's begin with class 12, chapter 1, variations in psychological attributes. So the first topic is individual differences in human functioning. Now individual differences हमारे वो distinctive characteristics होते हैं which make us different from others. For example, all of us have a different weight, a different height and a different skin color. Now some psychologists believe that our behavior is influenced by our personal traits, which means कि जो हमारे internal traits हैं, these are reflected in our behavior. But the situationist perspective suggests something opposite to that. It says that behavior is more a result of the external factors, that is, the situations that we are in. For example, an aggressive person may act in a submissive manner in front of his or her boss. Now comes assessment of psychological attributes. Now assessment पहला step है psychological attributes को समझने का, and it basically involves measurement and evaluation of the attributes, which can be done in two ways. First is the informal assessment, which is subjective and it varies from person to person. For example, if I engage in an informal assessment of a person and if someone else does so, both our results would be different. But formal assessment is objective, standardized and organized, which means it has a systematic testing procedure to it और उसका जो scoring and interpretation है वो similar तरीके से निकलता है. Now, psychological assessment uses systematic testing to evaluate abilities, behaviors and qualities. Now again, it is a related concept to that of formal assessment, जिसमें एक systematic procedure होता है, एक set procedure होता है जिससे हम scoring और interpretation करते हैं. Now comes domains or areas of psychological attributes. Now these domains or areas of psychological attributes are not that simple. They are somewhat complex and multidimensional. Now we can understand the word multidimensional with the help of a cube that has various dimensions like height, breadth, length. Similarly, the psychological attributes too have certain dimensions. So the first one is intelligence. Now intelligence, this is a very commonly used word in our daily language and it is the global capacity to understand and think rationally and use resources. मतलब अपने environment को समझना और अपने resources को अच्छे से use करना. Second is aptitude, which is the underlying potential for acquiring skills. Now we can understand this with the help of an example. For example, if I have the aptitude for dance, this means that if I get proper training for dance, I will be able to do very well in that field. Third is interest. Now this is somewhat like a hobby. So interest is the preference for engaging in a particular activity. Next is personality. Now personality consists of those distinctive characteristics which make us different from others. When these characteristics are added up, these make up your personality. And now we have values, which are enduring or somewhat permanent beliefs about ideal behavior. Now these values could be religious, these could be emotional, social, any value. Now we come on to the assessment methods of psychological attributes. Now these psychological attributes, these also need some assessment methods. So the first one is psychological test. Again, this is objectives and standardized measure which is used for diagnosis, guidance and selection. इसका मतलब वापस से वही कि इसका एक set procedure होता है interpretation और scoring करने का. Next one is the interview, which is conducted on a one-to-one basis. Now interview is a very common word. और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो जॉब इंटरव्यू हम देने जाते हैं या फिर जो डोर टू डोर सर्वे करते हैं सेल्स पर्सन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम्स केस स्टडी. दिस इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द केस स्टडी ऑफ महात्मा गांधी और मे बी अब्राहम लिंकन. सो एनी ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका केस स्टडी होता है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. इसमें वी रिकॉर्ड बिहेवियर इन रियल टाइम. पर इसका जो एक लिमिटेशन है वो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब इफ आई observe a mother child reaction and if someone else does so, both our interpretations would be different. So this is one limitation of observation. Then comes self-report. Now in this we provide facts about ourselves through interview, questionnaire or personal diary.
नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट वन इज गिवन बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विच डिफाइंस इट एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, विच वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ PLUK, प्लक शॉर्ट फॉर्म, which stands for perceiving, learning, understanding and knowing. Similarly, we have given the short forms of the definition for Alfred Binet as well as David Wechsler. So Alfred Binet defines intelligence as ability to judge well, understand well and reason well. David Wechsler defines intelligence as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment. Moving on to the next concept, we come on to theories of intelligence. Now the first one is psychometric approach, जो कि intelligence को define करती है as a single or a similar set of abilities. तो एक सिंगल और सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को मिला के इंटेलिजेंस बनता है. दिस इज व्हाट इज सेड बाय द साइकोमेट्रिक अप्रोच. बट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस दैट पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस या कुछ और भी प्रोसेसेस यूज होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब करता है. मोर ओवर इट एम्फसाइजेस स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर. मतलब इंटेलिजेंस में जो भी कॉग्निटिव फंक्शंस या फिर थॉट प्रोसेसेस यूज होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पढ़ता है. Now the next topic is theories of psychometric approach. So the first theory of psychometric approach is the unifactor or the one factor theory by Alfred Binet, which states that intelligence consists of a single set of abilities which can solve all problems. इसका मतलब इंटेलिजेंस जो है एक सिमिलर सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज से मिलके बनी है जिसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट इज द टू फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स पियरमैन, जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है जी फैक्टर और एस फैक्टर से मिलके बनी है. जी फैक्टर तो ऐसे मेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि बेसिक हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, और एस फैक्टर हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो गई. इसका मतलब हमें कुछ भी काम करने के लिए हमें जी फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर हमें किसी फील्ड में बहुत अच्छा होना है तो हमें उस फील्ड के लिए एस फैक्टर भी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स एंड एथलीट्स, they have a G factor. In addition to that, they also have the S factor which makes them excellent in their respective fields. The next theory is the theory of primary mental abilities by Louis Thurston, who states that there are 7 primary abilities which are independent of one another. So these are verbal comprehension, which is related to speech and its parts. Second is numerical abilities related to numbers, of course. Third is spatial relations related to mental images. Fourth is perceptual speed related to speed of processing information. Fifth is word fluency related to the words and its usage. Next is memory, and the last one is inductive reasoning, which means deriving general rules from a set of pattern of ideas. Next comes the hierarchical model of intelligence by Arthur Jensen, which involves 2 levels of intelligence. Level 1 is associative learning and level 2 is cognitive competence. Now let's understand them in detail. So the first level, associative learning, में क्या होता है, हमारा जो input होता है that is somewhat similar to our output. For example, if I have a test and there's one chapter coming for that, तो मैंने वो रट लिया और वहाँ जाके मैंने टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मैंने रटे रटाए लिख दिए वहाँ जाके. तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, मेरा इनपुट जो मैंने चैप्टर लर्न किया और मेरा आउटपुट जो मैंने वहाँ जाके आंसर्स लिखे, दीज आर समवॉट सिमिलर. तो ये हो गया लेवल 1, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग. नाउ लेवल 2 इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. इसका हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, मेरे टेस्ट में एक चैप्टर आना है, मैंने वो लर्न कर लिया, वहाँ जाके मैंने देखा कि टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आंसर करने के लिए मुझे अपना जो मैंने कंटेंट लर्न किया है उसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो मैंने वो करके लिख दिया. सो my input, which was the chapter that I learned, and the output, which was my teda meda answer. Okay, that was different. Both were different. Okay, so this is what is cognitive competence, in which I had transformed the input to produce my effective output. Now comes the structure of intellect model by J.P. Guilford, which classifies intellectual traits into 3 categories. First one is operations. Operations ऐसे processes हैं जो respondent करता है, the examples of which are given below. Contents, जिन
जिस इंफॉर्मेशन पे, जिस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पे ऑपरेशन हो रहा है वो कंटेंट हो गया, जिसके एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. एंड द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट विच इज द फाइनल form in which information has been processed by the respondent. Okay, and products, these are classified into various forms which are given below. You can refer to the text. Now comes the theory of multiple intelligences by Howard Gardner. Now Howard Gardner ने ये बोला कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट करती हैं और वो सब इंडिपेंडेंट है. But when a problem arises, these different types of intelligences interact to find a solution to that problem. Gardner described 8 types of intelligences. First one is the linguistic intelligence. As the name suggests, it is the capacity to, use language fluently and express yourself. For example, writers and poets. Second one is logical mathematical, जिसमें लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ऐसे लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट्स एंड नोबेल प्राइज विनर्स. थर्ड इज द स्पेशल इंटेलिजेंस विच involves forming, using and transforming mental images. For example, pilots, sailors and sculptors, etc. When I say कि pilots और sailors की जो spatial intelligence है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? They are easily able to navigate through their routes. Fourth is the musical intelligence, which involves the capacity to produce, create and manipulate musical patterns. For example, musicians. सो म्यूजिकल पैटर्न्स को मैनिपुलेट करना, उनको बनाना किसका काम होता है? म्यूजिशियंस का काम होता है. सो दे आर जनरली हाई इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट कम्स बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें हम अपने पोर्शंस ऑफ बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ करते हैं फॉर वेरियस परफॉर्मेंसेज. फॉर एग्जाम्पल डांसर्स, एक्टर्स, जिमनास्ट्स, एथलीट्स, एट्सेट्रा. नेक्स्ट कम्स द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इसका मतलब दूसरों के स्किल्स, मतलब दूसरों के मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स को समझना, जिससे आप उनके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में बॉन्ड कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स. नेक्स्ट कम्स द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की नॉलेज होना. फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स. द लास्ट इज द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विच इन्वॉल्व sensitivity to the features of the natural world and awareness of the nature. For example, hunters, farmers, botanists, tourists, bird watchers, etc. Next comes the theories of information processing approach. So the first theory under information processing approach is the triarchic theory of intelligence by Robert Sternberg. Now Sternberg views intelligence as what? अपना सोसाइटी का या अपने कल्चर का गोल अकम्प्लिश करने के लिए जो इंसान अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है या फिर एक और अच्छा एनवायरनमेंट चूज़ कर सकता है या फिर अपने एनवायरनमेंट को शेप कर सकता है, वो इंसान इंटेलिजेंट हुआ. नाउ ट्राइआर्किक थ्योरी, ट्राई मीन्स 3, so there are 3 types of intelligence in this theory. First one is the componential or the analytical intelligence. Second is experiential or creative intelligence. The third is contextual or practical intelligence. So the first one, componential or analytical intelligence. So the persons who are high on this, they can think analytically and critically, तो वो generally school toppers होते हैं. अब इस इंटेलिजेंस के भी 3 components हैं. पहला है knowledge acquisition component, which involves learning and acquisition of the ways of doing things. For example, I have a test. तो इसमें क्या होगा? I will decide what do I have to learn, how do I have to learn. Second is meta or a higher order component, which involves planning concerning what to do and how to do. In this I will decide the ways. मतलब अगर मेरा टेस्ट है तो I will decide how will I learn it, whether I will just rectify it or I will use some flow charts to do it. Third is the performance component, in which involves actually doing things. In this I will actually learn the chapter for my test. Second comes एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस. अब इसमें क्या होता है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली यूज़ करते हैं टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स. सो द पर्सन्स हु आर हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो अपने डिफरेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस को ओरिजिनली यूज़ करते हैं जिससे वो नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कर पाएँ.
Third is the contextual or the practical intelligence, which is also sometimes known as street smartness or business sense. अब ऐसे लोग जो contextual intelligence में हाई होते हैं उनको हम जुगाड़ू बोलते हैं. वो क्या करते हैं, अपने जो इन्वायरमेंटल डिमांड्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें फेस करने पड़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, है ना. एंड दे कैन ईजिली अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट. या तो वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से अडेप्ट हो जाएंगे या फिर एक और अच्छा इन्वायरमेंट चूज कर लेंगे या फिर अपने इन्वायरमेंट को शेप कर लेंगे. सो दे जनरली टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. Next topic is planning, attention, arousal and simultaneous successive processing. Pass model of intelligence by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. तो अब इस मॉडल में बोला गया है कि जो इंटेलिजेंस है या फिर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उसमें इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स की, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन. So the first process is arousal or attention, which is very basic to any behavior, क्योंकि ये ही हमें हेल्प करता है to attending to any stimuli, और ये दोनों processes हमें हेल्प करते हैं to process information. Okay. For example, when Rahul's teacher told him that there is a test day after tomorrow, तो ये एक arousal हो गया जिसकी वजह से he will be forced to learn the chapters, to revise the contents of the chapter, to clear out his doubts from the teacher. The second is the simultaneous processing, which we will understand with the help of an example of Raven's progressive matrices RPM test. अब इसमें क्या होता है, एक बड़ा फिगर दिया होता है और उसके बीच में से एक पार्ट मिसिंग होता है. Now we have to choose the most appropriate part from the 6 given figures below, which rightly completes the bigger figure. So now here we can see ये जो fourth वाला part है, it is appropriately completing the figure. तो अब यह आंसर हमें कैसे पता चला, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की वजह से पता चला. ओके. नेक्स्ट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ये कब होता है, जब हम सारी इंफॉर्मेशन सीरियली, सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर में याद कर लेते हैं जिससे कि हम एक बोलें तो बाकी इंफॉर्मेशन भी हमें याद आती जाए. फॉर एग्जाम्पल लर्निंग डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. जैसे हम 1 2 3 4 बोलते हैं तो हमने 1 2 बोला तो 3 4 5 6 7 8 अपने आप हमें याद आता गया. दिस इज़ व्हाट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ABCD बोला तो EFGH अपने आप याद आता गया. हमें कोई नींद में भी उठा के पूछ लेगा तो भी हम उसको फटाफट रिकॉल कर पाएंगे. ऐसा क्यों हुआ, सक्सेसिव प्रोसेसिंग की वजह से हुआ. थर्ड, प्लानिंग. दिस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी. इसमें क्या होता है, बेसिकली हम पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में सोचते हैं, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं. अगर एक प्लान नहीं काम किया जो हमने सोचा था करना चाहिए तो हम प्लान को चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल की टीचर ने बोला टेस्ट है, तो राहुल ने टाइम टेबल भी बना लिया, उसे वो फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा है पर उससे नहीं हो रहा. तो फिर वो फाइनली क्या डिसाइड करता है कि आई विल डेडिकेट मोर टाइम टू माई स्टडीज. सो दिस इज वॉट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ राहुल. Now the last topic for this video is cognitive assessment system, जिसके अंदर verbal as well as non-verbal tasks आते हैं जो कि basic cognitive functions या basic thought processes को measure करते हैं, analyze करते हैं, which are presumed to be independent of schooling. अब जो बच्चे who are in the age group of 5 to 18 years of age, they need not go to school to be able to give this assessment. Okay, और इसका यूज़ क्या है, हमें इसके रिजल्ट्स बहुत काम आएंगे ऐसे बच्चों को हेल्प करने में, ऐसे बच्चों को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करने में जिनको कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतनी नहीं है कि वो अपने पीयर्स के साथ compete कर पाएँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2. थैंक यू सो मच.